Hello viewers, my name is Ashok Sen Gupta from School of Management Sciences, Lucknow. Today topic of discussion is balance sheet without adjustment. So, this is a final stage of financial final accounts, and we know that there are three stages basically: trading account, profit and loss account and balance sheet. So, when we talk about the balance sheet, we feel that there is a whole information what a person want from a company is available in the balance sheet. Balance sheet is not an account, it is a kind of statement which shows the overall figures, company's health and its performance to the general public or to the stakeholders. Without adjustment here means there are some adjustment required at the time of trading account. When we having a trading account, then yes, then we have to make some adjustment, but here we are doing some good examples where without adjustment examples. Any other in next video we can understand about the aspects of adjustment in balance sheet. So, a statement which states out the assets and liability of a firm or institution of a certain date. A certain date here means बैलेंस शीट इज अप टू ऑन सर्टेन डेट, इस दिन तक कंपनीज की बैलेंस शीट में ये लायबिलिटी और ये एसेट था, दैट्स वाई स्पेसिफिकली गिवन देयर ऑन अ सर्टेन डेट, लिखा भी रहता है, इट इज रिटन ऑन द बैलेंस शीट एज ऑन सर्टेन डेट. देयरफॉर एज पर द फ्रांसिस आर, a balance sheet is a screen picture of financial position of going business movement. A balance sheet is one of the three fundamental statement of financial position or financial accounting or final accounts. Balance sheet compares balance sheet having the liability side and asset side, and both matched, both must match automatically. If both sides of balance sheet matched, then it seems that all the accounting transaction which we did during the previous financial year, in whole financial year, it is okay and there is no error. If there is no error, our balance sheet will match, and the balance sheet shows the proper picture of a company. If you have a balance sheet statement, if a person having a knowledge to understand and interpret the balance sheet of a company, then with this balance sheet he can interpret the financial position of the company. He or she can compare the past balance sheet and able to understand and will conclude that what is the performance, if there is any growth or not. What is the position of the company, is moving upward, downward, or still on constant basis. It is the last stage of final account. It is prepared on the last day of the accounting. I said here last date, but it is not actually last date, because compiling the data and collecting the data, here last dates means we do not include anything after 31st March. That will be in another book of account. We include till 31st March. We include the data 31st March. It takes time because the big companies need compile the balance sheet of branch wise and consolidate balance sheet. Each and everything have to be audited. Therefore, it takes 2 to 3 months for final balance sheet disclosed by the companies in various newspapers and their websites also. It is prepared after trading and final account, profit and loss account, because from profit and loss account we get the profit or loss which is important part of the balance sheet.
So, it is last stage. It shows the financial position of the business as a going concern. Balance sheet is not an account, it is a statement I already stated you, having a asset and liabilities, having a asset and liabilities. There are two sides of balance sheet, left hand side, right hand side. So, if we talk about balance sheet, so this is liability side and this is asset side. So, if I am facing this one, if I am facing this one, this is my right hand side and this is my left hand side. Okay. And both must be matched. Purpose of balance sheet is to find out what is the how much liability we have and how we can utilize our liability to create our assets. How we either we able to maintain the accounting equation. So, accounting equation means equity plus liability or owner's equity plus equal to asset. So, whatever the fund you receive from this, you have to utilize by assets. So, total of liability side must be equal to asset side. This technically shows we receive fund from equity from different and we have different debts, we borrow the funds and from that fund how much assets we create, how we utilize that fund, what is the cash balance we have, what is the flow, what is the amount of debtors, what is the amount of creditor we have, stocks we have. So, everything we can find out in balance sheet. If you are able to understand increase or decrease in the debtors, you can find in the balance sheet. If you want to know about the cash in bank, you can find in the balance sheet. If you want to know the stock means inventory, not the share market. If we talk about the inventory, increase or decrease in the inventory, we can easily find it with the help of balance sheet. So, balance sheet gives you a right view to understand the health of a company. From trading account we get the profit, gross profit, from profit and loss account we get the net profit or loss, but from balance sheet we also able to understand the other aspects, not only income and expenses, other aspects like assets and liabilities. What are the liabilities? How much amount we have to pay to the borrowers, to the creditors? What is the position of our assets? Fixed assets, current assets. So, all these are the answer of all these questions are available in balance sheet. So, this is the small format of balance sheet. See, balance sheet of as on, this is specifically here given that as on, it must be a 31st March 2021 like this specifically. So, here liability side started with capital. So, here the word general word is capital, either it is sole proprietorship or it is share capital. It depends upon nature of the company, nature of the organization. Whatever the capital we have to write it here and then add or less, add the profit or less the loss, add the profit or less the losses. Then we also subtract or less the drawings. So, what are drawings? We know drawings are the
when a owner of a company withdraw some amount, withdraw some capital from company to its own personal use, this is known as drawing. So, when a person use company's fund for his personal use, it is known as drawing. Therefore, the amount must deduct from the capital. So, we deduct the drawing amount from capital. Then long term liabilities, long term and short term liabilities. Long term liabilities means the amount which we need to return more than a period of 1 year, after 1 year, like loan, bank loans, long term loans, bank loan. Current liabilities are the liability which we have to repay within a period of 1 year, that is known as current liability, like sundry creditor, outstanding expenses, bills payable, overdraft, etc. These expenses we need to repay after within a period of 1 year. एक साल के अंदर ये लौटाना होता है, इसलिए हमें करंट लायबिलिटीज़ बोलते हैं। वो लायबिलिटी जिनको एक साल के पीरियड से ज़्यादा टाइम में हम लौटा सकते हैं, उनको हम लॉन्ग टर्म लायबिलिटी बोलते हैं। उनमें से होता है, सबसे बड़ी बात होती है उसमें होता है लोन, और टर्म लोन, बैंक लोन 20 साल 30 साल तक लिए होता है, तो हम उसमें डालते हैं। Let's talk about asset side. So, asset sides having different type of assets. Fixed assets, sorry, goodwill is not a part of fixed assets, it is an intangible or fictitious asset. So, land is a part of fixed assets, machine is a building is a part of fixed asset, plant and machinery, furnitures are the part of fixed assets. Investments, you can, if you invest in somewhere, आपने कहीं इन्वेस्ट किया वो यहाँ पे आएगा। करंट एसेट्स वो एसेट्स जो एक साल के अंदर यूज़ हो जाते हैं, लाइक स्टॉक्स। सो यहाँ पे हम क्लोजिंग स्टॉक लिखेंगे, ओपनिंग स्टॉक आपका ट्रेडिंग में आता है तो क्लोजिंग हम यहाँ लिखेंगे। इनकम, एक्रूड इनकम, जो इनकम होने वाली है। प्रीपेड एक्सपेंसेस से पहले से पे कर दिया आपने, प्रीपेड जैसे बिल पे करते हैं ना, प्रीपेड मोबाइल बिल्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस, तो जो पहले से पे कर दिया अभी ड्यू नहीं हुआ। सन्ड्री डेटर्स जिनसे आपने पैसा वापस लेना है, बिल रिसीवेबल, कैश इन हैंड एंड बैंक। Apart from this, we have assets like livestock. Those who are dealing with livestock, वो भी asset का part होता है। Goodwill is a fictitious assets, okay, जो दिखाई नहीं देता, but it's a part of assets. Other than this, we have a tangible, intangible. We can classify the assets in two part. Assets को हम दो पार्ट में बांट देते हैं, tangible and intangible. टेंजिबल एसेट्स में आ जाते हैं यही सारे जो हम जिनको हम छू सकते हैं, विच वी कैन टच, विच वी कैन फील, फर्नीचर, मशीनरी एक्सेट्रा और द वाटर। इंटेंजिबल एसेट्स लाइक ट्रेडमार्क, ओके, ट्रेडमार्क, पेटेंट राइट्स, लाइसेंस, सॉफ्टवेयर लाइसेंस। सो दीज आर आवर एसेट्स. These are our assets, but we cannot touch them, we cannot feel them. Okay. Trademark of Tata, you can see, we see trademark of Tata is like this one, ऐसे कुछ होता है. Okay. LG का ऐसे कुछ होता है, this is LG. So, these are the trademark, registered trademark, no one can use them without your permission, that is why they is your asset. Similarly, patent, if you have a patent, if you discover something, new machine, new formula, new kind of antidotes, antibiotic, any kind of patent, like the vaccines which vaccines for COVID shield, COVID, the company manufactured these vaccines, patent these vaccines. So, no one can use them with their name कि हमने बनाया हम बेच दिया. So, these are
also asset, and these assets are intangible in nature, but intangible in nature and part of that balance sheet. So, this is a simple format of the balance sheet. There are much more items can be added in the balance sheet, lots of items are added in a balance sheet. We must understand about the difference between balance sheet and trial balance. So, it looks similar like that, but both are totally different, both are totally. The first difference is objective, to check the arithmetical accuracy in recording and posting. The objective of trial balance is to check the accuracy of recording and posting. And what is the objective of balance sheet? To ascertain the financial position of the company. ओके, ट्रायल बैलेंस का क्या होता है? एक्यूरेसी चेक करना। बैलेंस शीट का क्या होता है? फाइनेंशियल पोजीशन देखना कंपनी का। पर्सनल रियल अकाउंट नॉमिनल अकाउंट आर शोन। पर्सनल रियल एंड नॉमिनल अकाउंट्स आर शोन, उनके जो बैलेंस होते हैं वो ट्रायल बैलेंस में आते हैं। पर बैलेंस शीट में सिर्फ पर्सनल एंड रियल आता है, नॉमिनल अकाउंट का बैलेंस नहीं आता है। बैलेंस ऑफ नॉमिनल अकाउंट इज नॉट शोन इन बैलेंस शीट, एक्सपेंसेस एंड इनकम इज शोन इन ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसलिए यहाँ पे नहीं आता है। It's prepared, trial balance is prepared and according to the decision of the finance department, accounts department, monthly, quarterly हम एक बार trial balance बनाते हैं and we prepare the trial balance to check the accuracy. That's why we frequently prepare the trial balance according to our requirement, but balance sheet only at the end of the financial year. Trial balance is used for only for internal use only, but balance sheet is for both. इंटरनल यूज़ भी होता है बैलेंस शीट का, डिसीजन मेकिंग लिया जाता है बैलेंस शीट को देखते हुए, सारे मैनेजमेंट डिसीजन लेता है, मैनेजमेंट टेक द डिसीजन मेकिंग, एम्प्लॉयज़, ट्रेड यूनियंस, ऑल, एंड एक्सटर्नल यूज़ ऑल्सो, शेयर होल्डर्स, पार्टनर्स, suppliers, bank, all required your balance sheet to analyze the company's performance, to analyze the company's performance. Trial balance is a list of balance of general ledger account. It is a list of balance. Trial balance क्या है? Trial balance is a list of balances. दो मेथड से किया जाता है ट्रायल बैलेंस, डायरेक्ट टोटल मेथड एंड बैलेंस मेथड. सो इज ए लिस्ट ऑफ बैलेंस इन द ट्रायल बैलेंस. बैलेंस शीट इज द स्टेटमेंट शोज, बैलेंस शीट स्टेटमेंट है विच शोज एसेट, लायबिलिटी एंड इक्विटी ऑफ द कंपनी. एसेट, लायबिलिटी एंड इक्विटी ऑफ द कंपनी. ट्रायल बैलेंस में डेबिट एंड क्रेडिट कॉलम होते हैं. यहाँ पे क्या होता है? एसेट कॉलम होता है और लायबिलिटी कॉलम होता है. एसेट कॉलम होता है और लायबिलिटी कॉलम होता है. एग्जाम्पल, स्टॉक अगर बात किया जाए तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक दोनों ही ट्रायल बैलेंस का पार्ट होते हैं, बट बैलेंस शीट में सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक लिया जाता है. Trial balance is a not part of the financial statement, but balance sheet is a part of the financial statement. अब थोड़ा सा ट्रायल बैलेंस देख लेते हैं. देखिए ट्रायल बैलेंस यहाँ पे बनाता हूँ मैं, हम लोग इस तरह बना सकते हैं. ओके, ये डेबिट साइड हो गया, ये क्रेडिट साइड हो गया. अब हमारे पास नंबर्स ऑफ अगर लेजर्स हैं, बहुत सारे लेजर्स हैं हमारे पास, ठीक है. तो हम लेजर्स को अकॉर्डिंगली यहाँ पे और यहाँ पे लिखेंगे. कहाँ लिखेंगे? डेबिट साइड में और क्रेडिट साइड में. यहाँ पे हम सारे जो भी आपके एक्सपेंसेस यहाँ डाल देंगे और यहाँ पे जो भी इनकम वहाँ डाल देंगे. तो हम यहाँ पे सारे लेजर्स को इंक्लूड कर लेते हैं. तो बैलेंस शीट में हम एक्सपेंसेस के लेजर्स को नहीं डालते हैं.
सिर्फ क्योंकि एक्सपेंसेस ऑलरेडी हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में और ट्रायल बैलेंस में ट्रेडिंग अकाउंट में दे चुके हैं, सारे लेजर एडजस्टेड कर चुके हैं, तो वहाँ से जो फिगर निकल के आता है, द फिगर फ्रॉम द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दिस इज प्रॉफिट, द प्रॉफिट और लॉस इट्स कम इन द बैलेंस शीट, तो वो इसलिए बैलेंस शीट इज डिफरेंट फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस. So, this is illustration of the balance sheet. Look, there are different items given in the balance sheet. So, how we can prepare the balance sheet from this statement? So, first we need to classify that, we need to classify debtor balance sheet में आएगा, opening stock trading में आएगा, land and building balance sheet में आएगा, ऐसे हम करना चाहिए, अदरवाइज कंफ्यूज हो जाएंगे. कैश इन हैंड हमें बैलेंस शीट का पार्ट होता है, कैश इन हैंड बैलेंस शीट का, वेजेस ट्रेडिंग का पार्ट होता है, बिल रिसीवेबल बैलेंस शीट का, इंटरेस्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, बैड डेट्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, फर्नीचर बैलेंस शीट का, डेप्रिसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, रेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ड्राइंग कहाँ जाएगा, ड्राइंग जाएगा बैलेंस शीट में माइनस होगा, परचेज ट्रेडिंग का पार्ट होगा, ऑफिस एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट होगा, कैपिटल बैलेंस शीट का पार्ट होगा, इंटरेस्ट प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट होगा, सेल्स ट्रेडिंग का पार्ट होगा, बिल पेबल बैलेंस शीट का पार्ट होगा, क्रेडिटर बैलेंस शीट का पार्ट होगा, एंड क्लोजिंग स्टॉक भी बैलेंस शीट का पार्ट भी हो सकता है और ट्रेडिंग का भी पार्ट भी हो सकता है, दोनों का पार्ट हो सकता है. तो यहाँ से हम लोग बना सकते हैं ट्रेडिंग अकाउंट जैसे बना हुआ है. देखिए यहाँ ट्रेडिंग अकाउंट बना हुआ है और ट्रेडिंग अकाउंट में यहाँ पे हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट निकला 90,000 रुपया. इस ग्रॉस प्रॉफिट को हम लोग यहाँ ले गए क्योंकि प्रॉफिट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कोई नाम लिखा हुआ है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले गए, तो यहाँ पे हमें ग्रॉस प्रॉफिट हुआ, इंटरेस्ट भी हमें मिल गया, और फिर सारे एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस घटाने के बाद ऐसे आई टोल्ड यू हमें नेट प्रॉफिट मिला 23,000. This figure moved to the balance sheet. Now come to the balance sheet. ड्राइंग हमने माइनस कर दिया बैलेंस शीट में से, मैंने बताया था कैपिटल में से माइनस करना होता है. क्रेडिटर हमारे पास इतना था, बिल्स पेबल इतना था, नेट प्रॉफिट हमने पिछले से लिया और यहाँ रखा. एसेट साइड में हमने कैश लिया, कैश एंड बैंक लिया, बिग रिसीवेबल डेटर ले लिया, क्लोजिंग स्टॉक मैंने बोला वहाँ भी ले सकते हैं, वहाँ लिया. फिक्स्ड एसेट फर्नीचर प्लांट एंड मशीनरी लिया. फाइनली देखिए ये दोनों मैच कर गया, यहाँ पे कहीं बैलेंसिंग फिगर नहीं है, यहाँ पे कहीं बैलेंसिंग फिगर नहीं होगा जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होता है, यहाँ पे कहीं बैलेंसिंग फिगर नहीं होता है. दैट्स वाई बैलेंस शीट ऑटोमेटिकली मैच होना चाहिए, बैलेंस शीट मस्ट बी ऑटोमेटिकली मैच. Therefore, balance sheet not a it's a statement, it's not a account. Account में बैलेंसिंग फिगर आता है, बैलेंस शीट में नहीं आता है. This is another format of balance sheet which is helpful for the people those who want to compare the things. तो यहाँ पे हम compare कर सकते हैं. This is known as vertical format of the balance sheet. यहाँ पे we can calculate the current assets फ्रॉम 1817. ठीक है, चेंजेस क्या आए देखिए यहाँ पे चेंजेस आ रहा है ना. सो these kind of balance sheet are prepared by the people or financial analyst and give their views according to the performance of the company, therefore this is the percentage change and we can compare 2, 3, 4, 5 years. Because we have Excel nowadays, we can use the Excel, we can put the data and compare the things of same company for last 2 or 5 years. We can compare the same company if they have a same type of format, if they following the same format of balance sheet, we can also compare two companies performance with each other. So, my dear friends, my students, in today's session we understand about the balance sheet and without adjustment.
we understand how balance sheet is differ from the trial balance. Balance sheet is not an account, it is a statement. It shows the asset, liability and equity things, while expense and income are remain in trading and profit and loss account. From trading and profit and loss account, we collect only the net profit or net loss and to the balance sheet. Balance sheet shows the overall performance of a company. It is a kind of mirror which shows what is the position of the company, what is the how company is going on, what is the number of debtor increase, decrease, creditor, liability side, all these things. So balance with the help of balance sheet we can analyze, we can invest in any company. These are the books for your references, and thank you for watching this video.